Today's topic, transportation in human beings from the chapter Life Processes. Transportation in human beings, that means transportation of oxygen, food and waste products from one body part to another. That means blood, which is the carrier, it transports food, waste products, oxygen from one part of the body to another. The main transport system in human beings is the circulatory system. यानी ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं. And this circulatory system or human transportation system mainly consists of three components. One is blood, second blood vessels, and third heart. Now we are going to discuss them one by one. First of all, blood, which is the carrier which takes oxygen, food or the waste products from one part to another. And this blood again consists of four components. First is plasma, which is the liquid part of the blood, and the components which are oxygen, water, carbon dioxide, even waste, they are transported through this liquid part of the blood, which is plasma. Second is red blood cells. They are red because of the presence of a red colored pigment called hemoglobin. And this hemoglobin is responsible for transportation of oxygen. That means to make blood look red is not the function of red blood cells. यानी red blood cells का काम आपके blood को red बनाना नहीं है. The function of red blood cells is to carry oxygen with the help of hemoglobin. Now the third component of blood is white blood cells. They are white because they do not have any pigment, and these are the cells which are our defensive mechanism, which kill harmful microbes and protects our body. That means these are our soldiers which make us protected, which prevent us from various infections and diseases. And the last but not the least component of the blood is platelets. These are the cells which help in clotting of blood. That means if there is any cut or any injury, these platelets help not to excess loss of blood. That means it prevents blood loss from the body ड्यूरिंग एनी इंजरी. यानी अगर आपको कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो एक्सेस ब्लड आपकी बॉडी से वेस्ट ना हो. ये काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है. दैट मीन्स दे हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. नाउ द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट मीन्स द ब्लड वेसल्स. नाउ दीज ब्लड वेसल्स आर अगेन three types which are present in our body. First is arteries, second veins, and third capillaries. These blood vessels are very important and their differences are again very important. First of all, arteries. Just always remember A for arteries, A for away. So the function of arteries is always to carry blood away from the heart. यानी आपके हार्ट से ब्लड को लेकर जाने का काम आर्टरीज करती हैं. ऑल्सो दीज आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. एक्सेप्ट पल्मरी आर्टरी. आपकी सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मरी आर्टरी. एंड दीज आर्टरीज आर ऑल्सो थिक वॉल्ड. यानी इनकी जो वॉल्स होती है वो भी थिक होती है. Because as I told you, arteries carry blood away from the heart. यानी ऐसा ब्लड को लेकर जाती है जो हार्ट से आ रहा है. That means pumping organ से आ रहा है. So obviously the blood which is there in arteries must be in high pressure. तो उस प्रेशर को झेलने के लिए, उस प्रेशर को withstand करने के लिए these arteries are thick walled and they have pressurized blood. But a very important thing to note is that they do not have valves. Arteries में valves नहीं होती. Because as I told you, they have pressurized blood. So there is no chance of backflow. So backflow हो ही नहीं सकता क्योंकि pressurized blood it always move in the single direction. So they do not have valves.
Now veins. Veins always carry blood towards the heart. वेन्स हमेशा आपके हार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं. सेकेंडली, veins always carry deoxygenated blood, but exception is again there. Pulmonary vein carry oxygenated blood. आपकी सभी veins deoxygenated blood carry करती है. Only exception is pulmonary vein जो oxygenated blood carry करती है. Now the third important feature that veins are thin walled. जो veins होती है वो thin walled होती है. As I told you, veins they carry blood towards the heart. यानी आपकी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक पहुंचाने का काम वेन्स करती है. So it is taking blood from the rest of the body parts. So obviously the pressure of blood always be lower. So तो इन्हें thick walls की ज़रूरत नहीं होती. They are thin walled. But again a very important thing to note that these veins do have valves. वेन्स में क्या प्रेजेंट होती है? वाल्व्स प्रेजेंट होती है. बिकॉज प्रेशर इज़ वेरी लो, सो टू प्रिवेंट बैक फ्लो यानी वापस आपका ब्लड दूसरी डायरेक्शन में ना जाए, उससे बचाने के लिए इन वेन्स में क्या होती है? वाल्व्स होती है. सच दैट इफ ब्लड एंटर्स इन वन डायरेक्शन इट वॉन्ट मूव बैक. सो वेन्स दे हैव थिन वॉल्स बट दे डू हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इज कैपिलरीज. These are very narrow blood vessels which connects arteries and veins together. तो आपकी जो कैपिलरीज होती है ये कैसी ब्लड वेसल्स है? दीज आर वेरी नैरो, बहुत पतली बारीक ट्यूब्स जिन्हें कहते हैं. एंड दे कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर यानी आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो इन सब चीज़ों का एक्सचेंज के लिए कैपिलरीज प्रेजेंट होती है. एक्सचेंज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स as well as exchange between the blood and the cells takes place through the capillaries. Arteries और veins के बीच में exchange, इसके साथ साथ cells और blood के बीच में ऑक्सीजन, वेस्ट, इन सब चीज़ों के exchange के लिए भी capillaries helpful है. That means to each and every corner, to each and every point, oxygen, waste or water, food, everything reaches with the help of capillaries. So these are the three blood vessels which are present in our body. Now the third main component is heart, which is the pumping organ. Thank you.